Hello and greetings to all of you listening and watching. I am architect Manoj Saigal and my specialization lies in the field of urban and regional planning. I have also completed postgraduate diploma in Vastu Shastra, importantly. That is why I am hereby going to offer an introductory course on Vastu Shastra, which is titled as Introduction to Vastu Shastra as a Building Science, importantly. And as we know that the Vastu Shastra, which is an Indian ancient architectural guide, helps architects to design buildings that feel good to be in, and it suggests arranging spaces in a way that aligns with the nature and its energies like sun and wind. And following Vastu principles can make buildings more comfortable, inviting, and sometimes maybe even luckier for the people who use them. So this course exposes you and connects your knowledge with the domain of architectural science from the perspective of Vastu Shastra, importantly. And the domain of Vastu Shastra knowledge has ever since been evolving. That is why we are going to understand the basics of current trends of Vastu Shastra, importantly. So if you are an undergraduate student or a graduate or a field professional, or ultimately working as or practicing as an architect, you will find the foundation course a very good resource to revisit and revise the basics. And importantly, we have four major modules named as the introduction to domain, secondly, to deal with the residential architecture, then thirdly, we have discussions of commercial architecture, and fourthly, we have the discussions of urban planning. So these are the basic and major four modules, and in order to facilitate a very structured learning, we have broken down these modules into more than 30 lectures. So at the end of this course, what you are going to get is a form of 30 or more lectures, importantly. And just to give you certain glimpses, we will cover certain topics such as interior design, and then there would be the directional planning, and we would be having some cases of courtyard planning also. And ultimately, we would be learning the interrelationships of Vastu Shastra and Jyotish. So I look forward to interact with you all and provide you with a good quality resource. Thank you. So now moving on, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वास्तुशास्त्र का जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, that is either written in the Hindi language or in the Sanskrit language. तो जितनी भी आप बातें पढ़ेंगे, जितना भी आप नॉलेज गेन करेंगे, वो बेसिकली समझने के लिए हमें संस्कृत से डिकोड करना पड़ता है into Hindi language, and most of the literature is just available in this particular language only because संस्कृत को तो इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग्स के साथ हमने उतने अच्छे से कन्वर्ट नहीं किया है डे टू डे लैंग्वेज में. सो दैट इज व्हाई वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इज अवेलेबल इन द हिंदी लैंग्वेज ओनली. And also there would be some Sanskrit shlokas, for example, Ishanyam Devta Graham. So this kind of knowledge have been provided in the Shastras and the Hindu epics, so, which basically means ईशान्यांश का मतलब है ईशान डायरेक्शन या ईशान कोण, and देवता ग्रहम का मतलब है the house for the Lord or God, so which basically means the worshipping area. सो वास्तुशास्त्र के अंदर ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कहा जाता है. सो एक संस्कृत लैंग्वेज को डीकोड करके हमें पता लगा दैट आपको जब प्लानिंग करनी है तो पूजा एरिया को या ऐसा एरिया जहाँ पर आप जो भी अपने इष्ट देव को याद करते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करना है. सो दैट इज व्हाई देयर विल ऑलवेज बी द डीकोडिंग ऑफ द लैंग्वेज. So continuing in this introductory part, we would be understanding about the Parichay or the introduction of Vastu Shastra, and then what are the basic environmental aspects that are related to the Vastu Shastra, and also importantly
कन्वेंशनली किस तरीके से वास्तुशास्त्र को डिस्कस किया गया है और क्या पर्सपेक्टिव बनता है वास्तुशास्त्र को लेकर के, जिससे हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। देन अब हमें वास्तुशास्त्र के बेसिक परिचय के बारे में समझना है। परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन, की वास्तुशास्त्र शब्द का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ। तो एज यू कैन सी इट इज बेसिकली मेड अप of the two words which are Vastu and Shastra. So from the Hindi language we get to know that Vas means स्थापना करना या निर्माण करना, and Vastu means anything. So to make or to develop science which is related to the construction of the shelter is basically called as Vastu Shastra. शास्त्र पुराने समय में were the set of rules that used to define ways of doing things. आपको तरीके बताए जाते थे कि आपको कोई भी काम करना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है या कोई भी प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करते हैं इंपॉर्टेंटली। तो इसी तरीके से वास्तु शब्द के साथ कला का भी प्रयोग किया जाता है। एक तरफ आप देखिए दैट वी आर यूजिंग शास्त्र एंड ऑन द अदर हैंड वी आर यूजिंग कला। कला इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज आर्ट। दैट इज वाई जब भी आपने आर्किटेक्चर को पढ़ा होगा तो आर्किटेक्चर की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग्स। And here also, when we decode the perception of Vastu Shastra or Vastu Kala, we get to know that it is the discussion of art and science of the buildings. And also, it is also connected to the land, which is basically called as भूखंड। जब भी हम भूखंड पर भवन निर्माण करते हैं तो उसमें उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं के बारे में मार्गदर्शन करने वाले शास्त्र को वास्तु शास्त्र कहा जाता है। So let us continue with the introduction of the वास्तु शास्त्र, जहाँ हमें पता लगता है कि संस्कृत भाषा के वास्तु शब्द जिसका अर्थ होता है संरचना करना, उससे और शास्त्र से एज आई मेंशन प्रीवियसली जिसका मतलब होता है विज्ञान और साइंस से मिलकर के बना होता है। तो वास्तुशास्त्र बेसिकली मीन्स एज सिंपल एज वी कुड डिकोड इज संरचना विज्ञान। संरचना आप करेंगे भवन की, तो भवन बनाने के लिए जो भी विज्ञान या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको कि आप साइंस के पर्सपेक्टिव से प्रूव करते हैं लॉजिकली एंड कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, तो उस बिहाफ पर जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वास्तुशास्त्र। एंड अगर आप देखें तो वास्तुशास्त्र में भूमि, भवन, नक्शे और निर्माण के संबंध में नियमों और मानकों का अध्ययन किया जाता है। बाय भूमि वी मीन द एस्पेक्ट ऑफ लैंड firstly, then we have the discussion of bhavan which is building in itself, and thirdly we get to know about the naksha which is the planning, architectural plans हम लोग बनाते हैं। It is the basic thing or perhaps the most important thing as far as the whole architectural education is concerned. And then fourthly we have the nirman which is the construction. So वास्तु शास्त्र बेसिकली आपको लैंड प्लस बिल्डिंग प्लस प्लानिंग प्लस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स के बारे में साइंटिफिकली गाइड करता है। साइंटिफिकली गाइड करने का मतलब है कि जो लिटरेचर है वो आपको कहीं ना कहीं लॉजिकली चीजें बताता है, लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करता है। जैसा कि फॉर द एस्पेक्ट ऑफ किचन, if we are going to place it in the south east direction, so we have a set of energies attached to the direction, or there are the concept of sun orientation which we would be learning further. So that will be proving कि किस डायरेक्शन के हिसाब से किसी एक स्पेसिफिक टाइपोलॉजी ऑफ प्लेस को यदि प्लान किया गया है या डिजाइन किया गया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक
बात रही है या लॉजिक रहा है. सो दैट इज व्हाई वास्तुशास्त्र बेसिकली लैंड बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन से ओरिएंटेड साइंस आपको समझाने की कोशिश करता है. एंड ऑल्सो ऐसा भी माना जाता है कि जब आप वास्तुशास्त्र को समझते हैं और उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो जिन्होंने इस लिटरेचर की संरचना की थी या जिन्होंने भी इस लिटरेचर को डेवलप किया था, उनका एक टाइम पर मानना होता था दैट इट यूज टू प्रोवाइड यू सुखी समृद्धिक एंड स्वस्थ जीवन. एंड ऑल्सो आजकल के मॉडर्न टाइम्स में भी हम इसी तरीके के डिजाइन्स को फॉलो करना चाहते हैं, वेयर we tend to follow certain set of rules which perhaps increase our well-being. Well-being is the word. And comfort. A building always has to be comfortable from the perspective of thermal or sensible ways. सो दैट इज वाई वास्तुशास्त्र भी आपको सुख समृद्धि और स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड करने के लिए या जीवन जीने के लिए संरचनात्मक एवं वातावरण वाले प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, या ऐसे समाधान और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जिनके बिहाफ पर आप ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो कि एक तरीके से जहां पर आपका जीवन सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ता है. आगे चल करके ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि वास्तुशास्त्र की जब भी बातें शुरू हुई, तो ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में उपदेश दिया, या हिंदू माइथोलॉजी या एपिक्स जैसे कि रामायणा या महाभारता, इनके अंदर ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने इसके बारे में बात की और जिन्होंने इसके बारे में लिखा, और जो भी कन्वर्जन शास्त्रों में या पुराणों में हुआ, तो उस बिहाफ पर कुछ नाम है जो कि हिंदू इतिहास से रिलेटेड है. मे बी आप बिलीव ना करते हो इन दी mythologies of the Ramayanas and Mahabharatas, but then that is some other context. But eventually we have some names which talk about, or who talk about the concept of Vastu Shastra, namely Bhrigu Rishi, Aditya, Vishkarma, Vishnu Kumar, May, Narad Muni, Naganjit, Lord Shankar, Bhagwan Indra is there. If we perhaps believe in the definition of God, and then the Brahaspati, Kumar, Nandikeshwar, Shaunak, Garg, Bhagwan Sukdev is there, Anirudh is there, Shukra and Brihaspati. So you could clearly see the availability of these, uh, which we could say as the planets, which are related to the Jyotish or the astrology of the Indian context. So as we have been proving things very scientifically from the perspective of astrology, when it comes to the idea of astrology or numerology, we tend to believe this on the basis of the development and the locations of the planets, and same is the case with the Vastu Shastra. So furthermore, we'll be learning of how the Vastu Shastra is interconnected to Jyotish. But as of now, these 18 names are important, which are to be kept in mind while we have to learn the context of those who have been talking about the concept of Vastu Shastra as a discipline to be followed in the past times. सबसे इम्पोर्टेंट अब यहाँ पर ये जानना है कि वास्तुशास्त्र में दिशाएं या डायरेक्शंस किस तरीके से मैनेज की जाती हैं, या किस पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या नाम दिया जाता है. बिकॉज इवेंचुअली यदि आप वास्तुशास्त्र के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको सबसे ज़्यादा मदद करती है. बिकॉज अल्टीमेटली जब भी आप प्लानिंग करेंगे या डिज़ाइन बनाएंगे, रेजिडेंशियल डिज़ाइन या कमर्शियल डिज़ाइन, वट एवर, client or the somebody who is expecting the design from you would ultimately be asking things on the perspective of direction only. So वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा बेस ही माना जाता है कि किस तरीके से आप
डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव को समझते हैं और कितना अच्छे से आप डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं. So these are the four basic directions, as you all know, which is the east, south, west and north. तो हमारे पास चार fundamental directions हैं. Then we have furthermore four detailed direction, or we could say bifurcated directions, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर डिवाइड करके दो फंडामेंटल डायरेक्शन के बीच में बनाई जाती हैं. So if I would talk about the Agne cone, firstly, let us start with the Agne. So Agne would be termed as the direction between the south and east. So importantly, southeast direction would be termed as the Agne cone. This you have to remember. This is very important aspect of the Vastu Shastra, because if you tend to skip these all understandings of how the directions are in a way definited, so that would ultimately cause a problem to understand the basics of Vastu Shastra. So आग्नेय से शुरू होकर के clockwise direction में जब हम आगे बढ़ते हैं तो then we have the case of south west direction, which is the case of नैऋत्य. We have the criteria of नैऋत्य. Then जब हम आगे बढ़ते हैं we have the criteria of northwest. So this direction is called as वायव्य, as you could clearly see. And then lastly and fourthly, we have the fourth bifurcated direction called as the Ishan cone, or the northeast direction. As I previously mentioned that ईशान्याम देवता ग्रहम, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ईशान कोण को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है, आप ये डिकोड नहीं कर पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेस की प्लानिंग की जानी है. So this is perhaps the most important discussion of this whole lecture, that you have to learn of how the directional aspects are being named. Firstly, we have the Agni, then we have the Dakshin, then we have Nrityya, then we have the case of Paschim, then there is Vayavya, then there is Uttar, and then there is Ishan Cone. So these perhaps are the cones, or called as cone, and these are the basic dimensions which we generally follow whenever we consider the architectural planning. And also, as you could see that these grihas or planets are attached to these directions, we would eventually be understanding of how these directions and these grihas work with the case of energies, and how does it impact the overall planning of any residential or commercial space. So it is important that you are well aware of the thing called as the directional aspect of the वास्तु शास्त्र. आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वास्तु शास्त्र को दो प्रकारों में बांटा गया है, which is the ग्रह and the परिसर. As it is clearly understood that by griha you mean the house or the building, and from the parisar you get to know that it is about the site of, or whatever that is being left other than the building. Supposingly if you have planned building in this area, so this would be called as parisar, or the context of that particular building. हम मॉडर्न टाइम्स में भी इसी तरीके से प्लान करते हैं कि आप बिल्डिंग और साइट के इंटर रिलेशनशिप के बिहाफ पर प्लानिंग प्रिंसिपल्स को अटैच करके अल्टीमेटली अर्बन डिजाइन को प्रोड्यूस करते हैं. एंड सेम इज द केस विद दी वास्तुशास्त्र, जिसके अंदर आपको बिल्डिंग के बारे में और उससे अटैच्ड परिसर के बारे में बताया जाता है. जनरल अगर आप पर्सपेक्टिव को समझें तो वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल देखिए किस तरीके से किया जाता है. दैट भोजनालय को आप हमेशा, या रसोई घर को, विच इज परहैप्स द किचन, उसको आप हमेशा आग्नेय कोण में रखते हैं. अगर वो आग्नेय कोण में नहीं बन सकता तो उसको आपको वायव्य कोण में बनाया जाना पड़ता है या बनाना पड़ता है. बाय विच इवेंचुअली वी कैन अंडरस्टैंड कि देखिए किस तरीके से आपने जो अभी डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था, चार डायरेक्शन एंड इवेंचुअली दी फोर
बाइफरकेटेड डायरेक्शन। तो जो लिटरेचर अवेलेबल है वो आपसे सिर्फ इसी भाषा में बात करता है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से आपने किस प्लेस को या किस स्पेस को अल्टीमेटली प्लान करना है, which eventually sets the rules or set of principles to act on any kind of building. Moving on, as we could see that वायव्य कोण के रसोई घर के पूर्व की ओर मुख करके भोजन बनाना शुभ माना जाता है, बाय विच दे आर सेइंग कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट कॉर्नर परहैप्स आग्नेय कोण में अगर किचन को बनाया है तो आप कुकिंग ऐसे कीजिए दैट इज ईस्ट फेसिंग। इसके जो लॉजिक हैं ये हम डिटेल में समझेंगे आगे चल करके, बट देन द वास्तुशास्त्र इज अल्टीमेटली making you understand the interrelationship of direction and the place that is there in the architectural aspect. So this is the perspective that is there कि वास्तुशास्त्र आपको वो फ्रीडम और वो नॉलेज प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन के हिसाब से आपको किस तरीके का स्पेस या प्लेस अल्टीमेटली प्लान करना है एज पर द डायरेक्शन, एंड जिसके अंदर आप फंक्शनिंग लगा करके एक अच्छा सा आर्किटेक्चरल प्लान डेवलप करते हैं विद ऑल लॉजिक्स. So that is the base of Vastu Shastra. And also there is one more example of the Shayanagar, which is the master bedroom or the sleeping area, which says कि इसको सामान्यतः घर के नैऋत्य कोण में होना चाहिए. And if now understand that you are not aware of the नैऋत्य कोण, that it would then become difficult to sort of ultimately provide the plan. तो इसलिए जो भी आपने डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को लास्ट स्लाइड में सीखा उसको बड़े अच्छे से याद करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप डिटेल में फंडामेंटल्स में आगे बढ़ते जाएंगे देन अकॉर्डिंगली वो डायरेक्शंस ही आपकी नॉलेज को और आपके इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी. एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंटली स्टार्टिंग में हमने समझा था कि किस तरीके से कॉन्टेक्सचुअल इम्पोर्टेंस या आपके आसपास का वातावरण किस तरीके से वास्तुशास्त्र से इम्पैक्टेड होता है. सो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेसेस के अनुसार हमारे वातावरण का या विच वी कुड से साइट के माइक्रो क्लाइमेट का और माइक्रो क्लाइमेट से अटैच सराउंडिंग का, जो भी आपकी साइट की प्रॉक्सिमिटी होती है जिस भी जगह आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसका शुद्ध होना बड़ा ज़रूरी है. बाय शुद्ध दे मीन कि आप इस तरीके से डिज़ाइन करें दैट इट इज़ कंफर्टेबल, एंड प्राकृतिक सानिध्य एंड जलाशय का होना बड़ा ज़रूरी है. बाय विच दे मीन कि आपको नेचुरल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके डिज़ाइनिंग करनी है, प्लस वाटर बॉडी अगर वहाँ पर अवेलेबल है, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड strategy to design spaces as per the climate responsive architectural concept. सो अगर आप मॉडर्न आर्किटेक्चर को समझेंगे और वास्तुशास्त्र को समझेंगे तो यू वुड फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग को रिलेशंस इन बिटवीन दीज टू अंडरस्टैंडिंग्स. एंड ऑल्सो इट सेज दैट अच्छे भवनों में प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रामुखिक रूप से प्रयोग होता है. बाय प्राकृतिक परिस्थितियां वी मीन्स दी नेचुरल कंडीशन. जितना ज़्यादा आप नेचुरल एनवायरनमेंट से अटैच्ड बिल्डिंग बनाते हैं उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल वो बिल्डिंग जाकर के बनती है. एंड देन वी हैव द क्राइटेरिया ऑफ पेड़ पौधे विच इज़ द फ्लोरा एंड फौना और द वेजिटेशन परहैप्स. मॉडर्न एग्जांपल्स में भी हम वेजिटेशंस को अच्छे से यूज़ करते हैं, एंड आजकल के टाइम्स में जहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड जैसे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं. So from that perspective also green cover का criteria is very important to be discussed in the context of architectural design. And schools, hospitals, hotels, stations में परिसरीय वातावरण का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है. दैट इज़ वाई जो भी वास्तुशास्त्र आपको बताता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द contextual environment, then in a way it can be applied to a number of buildings, not only the residential but perhaps the other cases as well. And also in schools you may have experienced that वहाँ पर आपको cleanliness, safety and the contextual management को भी ध्यान में रखना होता है. So in totality वास्तुशास्त्र helps you to
develop a certain sort of rules or principles which would help to improve the contextual, um, we would say, environment of that particular site or particular area. So that is all what we have in the introduction of Vastu Shastra. I hope it is very clear to you all of what has been the basics of Vastu Shastra. And eventually moving on in coming lectures, we would be understanding the details of the directions that are attached, because as of now we have learned the aspect of only 8 direction, but then eventually we have the criteria of Vastu Purush, and it has a discussion of more than 32 directions. So we would be learning in detail of how the directional aspect works from the perspective of Vastu Shastra. So thank you so much for joining in and watching this video. I hope that this have been perhaps a very useful or knowledgeable content for you all. And in case you find any query or anything that you would like to convey, please reach out to us through our YouTube channel. And thank you so much to all of you.